This is 200 fps from Sony Alpha 1 and this one looks like 800 fps from the same camera. Let's find out how to make your footage from slow motion to super slow motion. हाय वेलकम टू माय चैनल। आप सोनी अल्फा 1 नहीं तो सोनी A7S3 में मैक्सिमम 200 fps पैल में और 240 fps NTSC में शूट कर सकते हो। ये दो कैमरा में आपको 800 fps का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। DaVinci Resolve में एक छोटा सा ट्रिक है जिसको यूज करके आप स्लो मोशन फुटेज को सुपर स्लो मोशन फुटेज बना सकते हो, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। सुपर स्लो मोशन का रिजल्ट अच्छा मिलने के लिए आपको दो चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। शूटिंग के टाइम में आपको शटर स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा और लाइट का इंटेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। Hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा। Please don't forget to like, share and subscribe. I'll see you soon with another video. Thanks for watching.